Hello everyone, this is Anshalika. Welcome back to my channel. So today's the topic is based on CJI DY Chandrachud's statement. High courts flooded with bail petition because district judges hesitate to grant bail due to fear of being targeted. So एक बेसिक सी चीज़ पे उन्होंने फोकस किया है कि हाई कोर्ट में जो बेल पिटीशन इतनी सारी आ रही हैं बिकॉज डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो ग्रांट नहीं कर पा रहे हैं बेल ताकि उनको टारगेट ना किया जाए. So CJI ने opined that this sense of fear is something no one talks about, but it is necessary to confront the issue to ensure that the lower judiciary is not rendered toothless and dysfunctional. So the CGI has given a statement on a certain topic, means एक ऐसे बेसिक चीज़ को उन्होंने हिट किया है जहाँ पे लोअर जुडिशरी की फंक्शनैलिटी पे उन्होंने डिस्कस किया है, क्वेश्चन नहीं उठाया, डिस्कस किया है. सो व्हाई द लोअर जुडिशरी इज़ नॉट गिविंग बेल टू or granting bail. So high courts are flooded with bail petitions. Now the question is why High Court are flooded with bail petition. So because the district judiciary is reluctant to grant bail. तो reluctant है मतलब रुकी हुई हैं, अपने आप को रोका हुआ है बेल ग्रांट करने से ड्यू टू फियर ऑफ बीइंग टारगेटेड. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY Chandrachud जी ने ये सैटरडे को कहा है. Justice Chandrachud was speaking at an event organized by the Bar Council of India to felicitate him after he took over the Chief Justice of India. So he has given a statement on a certain topic why there are so many applications or petitions are filed in High Court because lower judiciary के अंदर ये डर है कि if they grant bail then they will get targeted and इससे उनकी functionality में भी affect आता है. Now, this is something very crucial that we are discussing about. The exact question is why judiciary means lower judiciary is not granting bail to certain crimes or heinous crimes. So now the reason why higher judiciary is getting flooded with bail application. So the reason is because of the reluctance. मतलब उन्होंने अपने आप को रोक के रखा है at grassroots level. क्योंकि लोअर जुडिशरी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है वो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, ग्रास रूट क्राइम्स पे काम करते हैं, एंड दे हैव स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम ग्रांटिंग बेल because they have the fear that they will be targeted. Now why the people will target means अगर हम क्राइम्स को देखें तो बेसिकली जब भी कोई केस आता है सबसे पहले लोअर जुडिशरी में ही आता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है. इफ़ दे grant bail in such an heinous crime, now someone or the other will get up in the future and point that he granted a bail in heinous case. So ये statement दिया गया था CJI के द्वारा. So this statement in English reads this only: reason why higher judiciary is getting flooded with bail application is because of the reluctance of the grassroots to grant bail. And why are judges at grassroots hesitant to grant bail? Not because they don't have the ability, they understand it probably better than high court judges because they know crime is a grassroots level. But there is a sense of fear that I grant bail. Will somebody target me tomorrow? And I granted bail in a heinous case, the judge said. So this whole thing is based on everything that is reluctance. That अगर मैंने बेल ग्रांट कर दी तो कहीं फ्यूचर में मेरे ऊपर इस चीज़ को लेके पॉइंट ना हो जाए कि आई हैव ग्रांटेड बेल इन सच अ हीनियस क्राइम. सो दैट्स वाई दीज मल्टीपल bail application gets और comes in high court. सीजीआई कहते हैं कि इस सारे फियर्स पे कभी किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, किसी ने डिस्कस नहीं किया कि दैट लोअर जुडिशरी इज़ नॉट रेंडर टूथलेस एंड डिसफंक्शनल. इफ़ यू कमिट एन एरर surely the error is amendable, amenable to correction, and it is not that we are Supreme Court and we never commit errors. As they always say, the Supreme Court is not final because it is right, but it is right because it is final, the judge added. So sometimes ये फियर होता है कि हम कुछ गलत ना कर लें एंड कोई गलत डिसीजन ना ले दें दैट फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट पड़े. सो दैट्स वाई एरर कैन बी मेड एंड इट इज़ एमिनेबल, उसे चेंज किया जा सकता है. सो एरर्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी किए जाते हैं. दैट्स वाई समटाइम यू कैन जस्ट रेज अ क्वेश्चन एंड यू कैन पॉइंट आउट दैट दिस डिसीजन इज़ बीइंग wrong and you can correct them. So everything is correctable and if there is an error you can correct it. When we talk about judiciary hierarchy, सबसे पहला जो पॉइंट होता है इंटरफेस करने का विद कॉमन सिटीजन वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है. इन दिस रिगार्ड ही साइटेड द एग्जांपल ऑफ एन इंस्टेंस लाइक अरेस्ट और थ्रेट टू अरेस्ट व्हेन द कंसर्न person applies under section 438 of the code of criminal procedure at a district level court of for anticipatory bail. So सबसे पहला कॉन्टैक्ट इंसान का होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिकॉज उन्होंने सेक्शन 438
ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का एग्जांपल दिया एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर एंटीसिपेटरी बिल. सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is the district court first, then comes the high court, and then the supreme court. So in the view of this, CJI emphasized that, so he wanted to emphasize that district judiciary is as important as the High Court and the Supreme Court. That is why I always say that our district judiciary is not a subordinate judiciary, but it is a judiciary which is equally important, such as High Court or Supreme Court. The Supreme Court lays down all these big ticket judgments, judge on important issue, but the district judiciary is that small place, define peace, happiness, and faith of common citizen. The CGI said. So the point of contact for every common citizen is district court. The hierarchy that has been made means district court, high court, and the Supreme Court. That hierarchy is made. If something wrong happens in district court, then you can go to the high court. If something wrong decision given by the high court, you can go to the Supreme Court. So these three hierarchy are very important in one and the other way, and it is interconnected with each other, because these hierarchy is established so that if people feel that the judgment is not gone according to their, justice has not gone according to them, and if they find that injustice is being done with them, so they can go on the higher court. So this doesn't mean कि district court है, high court है या supreme court है तो they are supreme than other. Means Supreme Court is much supremer than High Court, and High Court is much supremer than District Court. Yes, there is an hierarchy. So the hierarchy is based because you can just go and appeal there. So the Supreme Court lays down all these big ticket judgments on important issue, but district judiciary is that small place, defines peace, happiness, and faith of common citizen. सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हो. सबसे पहले आप कहीं जाते हो, आप पिटीशन फाइल करते हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फाइल करते हो. तो ये सीजीआई ने कहा है. Now the CJI has not only talked about the judicial power of the district court. He has also talked about the infrastructure problem, bad infrastructure problem. While the central government has envisaged large number of schemes, it is important for the government to devolve funds to the judicial system to ensure they could improve infrastructure. एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है. नाउ one such case has also been arise regarding the toilet in for the women's in district court level. So multiple essay questions arise हो रहे हैं for district court, that infrastructure is not proper, everything is not up to the mark. So these are the issues that has also been pointed out. In the same breath, he stated that the issue is not just about funds. मतलब issue से funds से related नहीं है, but how that funds are employed for the purpose it is intended. वो funds कैसे use भी हो रहे हैं. Despite the issue, the judges acknowledge how the district judiciary have worked even though through the COVID pandemic, and the bar kept the torch burning and flag flying high while protecting the middle-aged lawyer. So यहाँ पे सिर्फ funds तो अलॉट किए जाते हैं, बट उसका यूज़ कैसे हो रहा है, एम्प्लॉय कैसे किया जा रहा है, किस पर्पज़ से. दिस इज़ द एग्जैक्ट क्वेश्चन. नाउ द अनदर क्वेश्चन इज द सीजे हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ सेंस ऑफ डिग्निटी, सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस amongst the district judges. So CJI ने another point highlight किया, morality पे means moral जो grounds होते हैं, like for example self confidence, self worth among the district judges. If the district judges don't have confidence in themselves, then their position in high. Then how can we expect district judge to grant bail in important case? There are provisos which may say that there should not be bail such as in heinous offences, and we as judge know that sometimes people are roped in such offences, and even information is exaggerated. And this is where district judge role is to weed them out. Else the higher court and Supreme Court is getting flooded with such bail petition the judge warned. Here he has talked about, मीन्स सीजीआई ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जजेस के कॉन्फिडेंस के बारे में बात किया है. नाउ हायरार्किकल सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि चीज़ें ईजिली कैटेगराइज करके सेग्रीगेट करके उसे क्लियर आउट करते जाएं. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को हीनियस क्राइम के अंतर्गत लाया गया है तो उसे इंफॉर्मेशन को एग्जैजरेट भी किया जाता है. नाउ इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ जज टू वीड देम आउट, उसमें से रियलिटी निकालें एंड उसे क्लियर आउट करें. नाउ द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ दिस
एक इतने से स्टेटमेंट का एग्जैक्ट पर्पस ये था कि ये बताना चाहते थे सीजेआई कि इतने सारे जो पेंडिंग पिटिशंस हैं वो क्यों हैं, बिकॉज हायरार्किकल सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि हम लोगों को इंसाफ दें। अगर वो बेसिक लेवल पे ही नहीं मिल पा अगर वो बेसिक लेवल पे ही नहीं मिल पा रहा है तो जस्टिस क्या होगा, डिले होगा, एंड जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड। सो इसीलिए इतने सारे पेंडिंग पिटिशंस हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं केस। सो द बेसिक मोटो वाज दैट टू टू फिल दैट लूप होल्स, मीन्स जिस लूप होल्स की वजह से केसेस इतने एग्जैजरेट हो रहे हैं, इन लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। सो दिस वॉज अ बेसिक स्टेटमेंट गिवन बाय द CJI to resolve this issue of injustice.